Yes. Good evening, everyone. Good evening, Anshul, Harsh, Raj, medical student. Yes. Good evening, guys. So, welcome back to the session. Yeah. Just a moment. Yeah, just a moment. Yes. I hope the audio and visuals are clear to each and everyone. Yes. I hope the audio and visuals are clear to each and everyone. Just give me a thumbs up in the chat box, beta. Yes. Good evening, Raj, beta. Just give me a thumbs up in the chat box if the audio and visuals are perfectly fine. So let us just start with the class. Yes, Raj says yes, it is like perfectly fine. Okay, beta. Chali, Anjum Naz, very good, beta. Very good. So we are going to start with a very important topic for today, that is carbohydrate metabolism. बेटा पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा. Okay, I will tell you about like all the processes that are occurring in the breakdown of glucose. Okay, what all processes we have to study in the entire carbohydrate metabolism. I will try to put it on one or two slides right now. Okay, I have like you should know how we are approaching the carbohydrate metabolism. Okay, how we are approaching the carbohydrate metabolism. Yes, Jay Shri Ashish, good evening, beta. Good evening, good evening. So let us just start with a very basic diagram, beta. Start with a very basic diagram. So yes, you already know, beta. We have something that is called as the stomach. Okay, we have something that is called as the stomach. Now, you already know that we are taking carbohydrate rich diet. Okay, we are taking in our body, it is the carbohydrate rich diet. Okay, we are taking carbohydrate. Okay, we are taking carbohydrate rich diet. Now, carbohydrate which we are consuming, beta, it is mainly in the form of disaccharides. Okay, it is mainly in the form of disaccharides. Kiran, beta, good evening. Anshul, beta, good evening, beta. Good evening, good evening, good evening, beta. Yes, Usman, good evening, beta. Okay. Now, when you consume carbohydrate, आप लोगों ने खाना खाया, you just took 1 liter of no Pepsi or no the basic diet that you are consuming, rice, chapati. Okay, everything is containing carbohydrates, right? The chapati that you are consuming, okay, the potatoes and everything. So basically, we are consuming carbohydrate. Okay, and these carbohydrates are in the form of disaccharides. So what disaccharides we have discussed? Can you just type in the chat box? I want everyone to answer. Madhu, good evening, beta. Prasad, good evening, beta. I want everyone to answer like what are the disaccharides that we have discussed. Beta, it will be tomorrow. Ashish, it will be tomorrow. My health was not good in the morning. Yeah. So what all disaccharides we are consuming? Just yeah, I have already discussed the name of the disaccharides. I want everyone to write it in the chat box. Okay. So remember, beta, what is happening? Meanwhile, you just type it. I will just continue with my flow chart. So as soon as it reaches the stomach, beta, now the process of digestion will start. Okay, the process of digestion will start. You already know these carbohydrates will be broken down. Okay, these carbohydrates will be broken down. No one is answering, beta क्या हो गया? Disaccharides पता नहीं है कौन कौन से disaccharides होते हैं? What are the different types of disaccharides that we have discussed? Revision of notes is very important, beta. If you are not revising it, it is like disaccharides के नाम भी नहीं बताओगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो मैं 11th क्लास के बच्चे को उठा के पूछ सकता हूँ. चल. Now after the digestion, beta, what happens? After the digestion, what will happen? Basically, yeah. Now digestion. Yes. Maltose. Very good, beta. Usman, very good. Ashish, maltose, lactose, sucrose. Very good, beta. So yes, अगर तुम लोगों ने लिख ही दिया है, so I should mention it over here, beta, that yes, if we are talking about maltose, okay, we have sucrose and we have lactose. These are the disaccharides. Okay, these are the carbohydrates that we are
consuming. Okay, these are the carbohydrates that we are consuming. Remember beta, the maltose, okay, maltose is a disaccharide. It will be broken down to form glucose plus glucose, glucose plus glucose. Yes, maltose क्या है, disaccharide है. So disaccharide will be broken down to form the monosaccharide, and it is formed from glucose and glucose. Remember the enzyme that is used to break down maltose into glucose and glucose. It is maltase. Yes, it is maltase. Okay, it is maltase. Right? Now, sucrose will be broken down into, beta jaldi se answer do. Sucrose will be broken down into. I want the answers everyone. सुक्रोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू, चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका. यस, सुक्रोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू, आंसर दो इसका. यस हर्ष, वेरी गुड, इट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. वेरी गुड हर्ष, आई एम रियली impressed if you are like answering the questions. It is like very good beta. Glucose plus fructose. Yes Raj, Madhu, Ashish, Jainam, Anshul, very good beta. And the enzyme beta, Kiran, very good beta. Enzyme का नाम बता दो. What will be the name of the enzyme that breaks the disaccharide, that is the sucrose, into glucose and fructose? Yes, it is sucrase. Okay, the enzyme that is used over here, it is sucrase, right? And later on, yeah, if we come to the third one beta, yes, everyone is right, everyone is right. Yes, very good. And the third one, that is the lactose, it will be broken down into, yes, tell me. हाँ ठीक है, सबका आंसर ठीक है. टेल मी, लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म. यस उस्मान, वेरी गुड, इट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. वेरी गुड हर्ष, मधु तिवारी, वेरी गुड बेटा, इट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, glucose plus galactose. And remember the enzyme that is used to break down lactose, it is lactase. It is lactase. Yes, everyone is right. Panda, Prasad, okay, Anshul, Madhu, very good. And the enzyme, it is lactase. Now I have a question to everyone. This is the basic that you have to know. So we are consuming beta carbohydrates. Okay, we are consuming carbohydrates in the form of disaccharides. Okay, in the form of these disaccharides. Okay, in the form of these disaccharides. Okay, and these disaccharides are broken down into monosaccharides. Okay, now I have a question to everyone over here. And let's see who will answer this question correctly. Okay, let's see who will answer this question correctly. So remember beta, carbohydrates okay, gets digested to form. Now this question, okay, gets digested to form what? If question mark का answer दीजिए. I want everyone to answer this question. Beta, you are already aware, if the carbohydrates are broken down, what you will get? What you will get? So I want everyone to answer. Yes Varun Kashyap, that is an incomplete answer. Yes Varun, glucose तो मिलेगा. Everyone is right. Manish, Jainam, Harsh, Anshul, very good. Glucose to milega, that is an incomplete answer beta. How you can forget about the fructose and the galactose? They are also the digested products of carbohydrates that we are consuming. Again, conceptual clarity is very important beta. Conceptual clarity is very important. So remember beta, the carbohydrates will get digested to form, yes, it is not only glucose, you will get fructose also, and you will get galactose also. Okay, you will get galactose also. So yes, I hope Alfie it is right beta. I hope till now this particular concept is clear to each and everyone. I hope till now this particular concept is clear to each and everyone.
फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि कार्बोहाइड्रेट्स जब डाइजेस्ट होते हैं बेटा, इफ दे आर broken down, they not only form glucose, they along with the glucose they form fructose and galactose as well. Yes, Raj, Harsh, Riya, Jainam, Madhu, very good. Very good, Kiran, very good, very good, very good, beta. Varun Kashyap, very good, beta. So you are very well aware. Now what will happen? Uh, yes, you already know after the digestion, what will be formed? Yes, we have glucose, okay, we have galactose, and we have fructose. Okay, we have fructose. So we have glucose, galactose, and fructose. Okay, we have glucose, galactose, and fructose. Now, beta, what happens? You already know we have an organ that is called as the liver. Okay, liver. So liver is situated on which side of the body, right or left? फटाफट से आंसर बताओ इसका सारे फर्स्ट ईयर. सो आई वांट टू नो कि अगर तुम्हें बेसिक चीज क्लियर है कि नहीं. Liver is situated on which side of the body, beta? Yes, liver is situated on which side of the body? बेटा राइट साइड पे होता है ना लिवर तो. लेफ्ट के ठीक है, क्या ही बोलूं मैं. बेटा राइट साइड पे होता है ना लिवर. कोई बात नहीं बेटा, पिक्चर देख लेना. नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट हैपेंस now? This glucose, galactose, and fructose, okay, this glucose, galactose, and fructose, okay, it will be like reaching the liver. Okay, it will be like reaching the liver through portal vein. Okay, through the portal circulation. Okay, they will be reaching the liver via portal circulation. Now this is, that is, after they are broken down they will be absorbed. Okay, the absorption, okay, absorption will take place, and they will be reaching it via a vein that is called as the portal vein. Okay, that is called as the portal vein. And these products, okay, these glucose, galactose, and fructose will be reaching to the liver. Okay, they will be reaching to the liver. Okay, they will be reaching to the liver. Yes. Now, bit of what happens. I will be discussing galactose and fructose differently. I will be discussing galactose and fructose differently. Now I will focus only on the glucose part. Okay. Now I will be focusing only on the glucose part. Okay. So, beta, agar if I am teaching, so please stop commenting like whosoever is from where. It hardly matters. Whatever I'm teaching, I think you have to pay attention to that particular thing, right? So yeah, that is my takeaway point for everyone. Yes, when I'm teaching, please concentrate on the screen. When I was not well, I have already informed you in the chat. Okay, so yes, I wasn't well today, so I didn't took. Now please, no more questions. Now it is absorbed via portal vein and it will reach the liver beta. It will reach the liver. Now the glucose has come like, okay, now glucose is in the liver. Now glucose is in the liver. Now what happens to the glucose in the liver? Now this is the first thing that we are going to discuss. Okay, what happens to the glucose in the liver? Remember beta, yeah, I'm just showing it over here. The glucose, okay, the glucose, it is converted to glycogen. The glucose, it is converted to glycogen. ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन. यस, ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन. ये तो सबको पता ही है, ये बेसिक चीज है. एक्सेस ग्लूकोज है, ओके, बॉडी में आपने बहुत सारा खाना खाया, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल नाउ एंटर इनटू द लिवर. ओके, एंड दिस ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी. You already know this. It is the storage form of glucose. Okay, it is the storage
form of glucose in the body. It is the storage form of glucose in the body, right? So you already know it is the storage form of glucose in the body. And this process, beta, this process of conversion of glucose to glycogen, it is called as glycogenesis. It is called as glycogenesis. Okay, this process glycogenesis, बेटा नाम में ही लिखा हुआ है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। एंड ग्लूकोज विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द glycogen. How it happens, we will discuss this in detail. That is our first cycle, this is the cycles that we will be discussing in detail. That is the glycogenesis in detail. क्या इतना समझ में आया सब लोगों को? क्या इतना समझ में आया? फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से चैट बॉक्स में, कितना समझ में आ गया? जल्दी से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में। यस, जयनाम, रिया, हर्ष, राज, मधु, प्रसाद, अंशुल, किरण, जयश्री, सेठी, उस्मान, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये पहला प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, ग्लाइकोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन कैसे रहा है, हाउ ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज, वी विल लर्न इन डिटेल। सो ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तुम्हें। अभी हमने, हमारा आज का टॉपिक है ओवरव्यू, कि हमें क्या क्या पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इतनी सारी चीजें हैं। तो पहले मैं आपको लिंक करवाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू स्टडी इन दिस, व्हाट एक्चुअली यू हैव टू स्टडी इन दिस। नाउ अगेन देयर इज वन मोर प्रोसेस बेटा गोइंग ऑन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि आफ्टर 4 आवर्स ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ठीक है, बॉडी में आफ्टर 4 आवर्स, अब ये तो है नहीं कि हर 4 घंटे में आप लोग खाना खाते रहते हो, एटलीस्ट 6 आवर्स 8 आवर्स के बाद ही खाना खाते हो। ठीक है, अगर कोई ठीक है, तो आफ्टर 4 आवर्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बॉडी को अब क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज कहां से मिलेगा? इसी ग्लाइकोजन से। ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ग्लाइकोजन ओनली, राइट? सो दिस ग्लाइकोजन will break down to release glucose. This glycogen will break down to release glucose, and remember that beta, this process it is called as, yes, glycogenolysis. Glycogenolysis. Glycogenolysis का मतलब होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। So that is something which is called as glycogenolysis. Okay, glycogenolysis, इतना क्लियर है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, राइट? So this is the second pathway that we have to discuss in detail beta. That is the second pathway that we have to discuss in detail, कि how glycogen it is breaking down to form glucose. What are the series of reactions that are there, right? So that is glycogenolysis. That is glycogenolysis. Now, from the liver, what will happen? Yeah, from the liver. Now this glucose, okay. Now from the liver, this glucose will enter into blood. Okay, will enter into blood. Okay, will enter into blood, and from this blood beta, okay, it will, from the blood it will reach to various organs of the body, brain, heart, kidney, lungs, सब जगह जाएगा। And you already know every organ of our body, it is made up of cell. Okay, it is made up of cell, right? The basic unit is cell. So it will try to reach each and every organ of the body, and blood, from the blood the glucose will enter the cell with the help of a transporter beta, with the help of a transporter, and this transporter it is called as glucose transporter. Glucose transporter,
and it is also called as GLUT. GLU का मतलब है ग्लूकोज, T का मतलब ट्रांसपोर्टर. Yes, RS patients, good evening. So from the blood, it cannot enter the cell directly, beta. It needs a transporter, and that is something which is called as glucose transporter. And with the help of this glucose transporter, this glucose will enter inside the cell. Okay, this glucose will enter inside the cell, and over here something will happen which will liberate energy. Okay, over here something will happen which will liberate energy. So I will come to this part also. टिल नाउ इतना क्लियर है सब लोगों को. अब मैं सेल के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात करूंगा. तो दो प्रोसेस तो आपको यहां पढ़ने हैं. दो प्रोसेस तो आपको यहां पढ़ने ही है. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस. इनको डिटेल में पढ़ना है, इनको डिटेल में पढ़ना है. यस मधु तिवारी, वेरी गुड बेटा. मधु तिवारी वेरी गुड. बाकी सब भी, उस्मान, हर्ष वेरी गुड. बाकी सब, आशीष वेरी गुड. जयनाम, राज, किरण वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. किरण, जयश्री, रिया, अंशुल वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. नाउ now what will happen inside the cell? Okay, what will happen inside the cell? अब बेटा देखो ग्लूकोज जो है वो कहां आ गया सेल के अंदर. ग्लूकोज जो है, if I just try to highlight this, you are very well aware कि ग्लूकोज अब कहां आ चुका है सेल के अंदर. Glucose has entered the cell. Now what will happen inside the cell to the glucose? What will happen inside the cell to the glucose? Now बेटा अब देखो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड एज? फटाफट से आंसर दो. व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड एज? चलो बेसिक बेसिक आंसर तो बेटा देते रहो, जल्दी से बता. Plasma membrane, very good, very good Jaina. You are very well aware that we have something which is called as the plasma membrane of the cell. ठीक है. Now, carbohydrate metabolism inside the cell we will now discuss. Yes, it is inside the cell. Yes, everyone is right. Yeah, everyone has answered. Riya, Raj, Harsh, Madhu, Kiran, Lipika, Usman, Anshul, Defaulter, Ashish, very good. Now, what is happening inside the cell? You already know that the cell is bounded by a covering. Okay, the cell is bounded by a covering, and yes, this covering, it is called as the cell membrane. Okay, the cell membrane. I'm just showing one side beta. It is like bounded from all the sides, right? So we have the cell membrane. It is also called as the plasma membrane. It is also called as the plasma membrane. Now, you already know we have glucose. Okay, outside the cell, we have glucose. Now, glucose will enter into the cell. Okay, glucose will enter into the cell. Okay, and this with the help of a transporter, and this transporter beta, it is called as the glucose transporter. It is called as the glucose transporter, or it is also called as GLUT. GLUT. I hope this you have already read in the word GLUT in the 11th biomolecules, right? If I'm not mistaken, although I have like many years like reading biomolecules way back. Anyways, yeah. So चल अब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अभी आज का ही टॉपिक है. वी विल बी डिस्कसिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन डिटेल. तो अभी इतना ध्यान रखना है कि नाउ ग्लूकोज हैज एंटर्ड इनटू द सेल. नाउ you already know beta this glucose. Yes, now this glucose is inside the cell. Inside the cell क्या प्रेजेंट होता है फटाफट से बताओ. inside the cell, if I just try to highlight inside the cell, what is there? क्या होगा inside the cell? What is all over present? चलो जल्दी से बताओ बेटा, सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? What are the components of the cell?
यस वेरी गुड, वेरी गुड। वरुण, आशीष, रिया, जयश्री, राज, वेरी गुड बेटा। ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये सारा का सारा जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज द साइटोप्लाज्म। अब ग्लूकोज कहाँ आ चुका है? साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ओके, ग्लूकोज कहाँ आ चुका है? साइटोप्लाज्म में आ चुका है। सो यू ऑलरेडी नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, you already know we have glucose. Now glucose is inside the cytoplasm, and the formula for glucose, it is C6H12O6. You are very well aware that the number of carbon atoms in glucose, it is 6. The number of carbon atoms in the glucose is 6. Now 1 mole of glucose or 1 glucose, okay, it will undergo a series of reaction. It will undergo a series of reaction. Yes, it will undergo a series of reaction and it will form pyruvate. It will form pyruvate. And this process of conversion of glucose to pyruvate, it is called as glycolysis. And more precisely, it is aerobic glycolysis. Aerobic का मतलब है बेटा in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. Okay. In presence of oxygen. In presence of oxygen. So aerobic glycolysis will take place. Now beta, you already know from one molecule of glucose, okay, from one molecule of glucose, two pyruvates will be formed. Two pyruvates will be formed. क्यों? क्योंकि pyruvate is a 3 carbon compound. Okay, 3 carbon compound, right? तो ग्लूकोज में कितने कार्बन थे बेटा? ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6। पायरुवेट कितने बने? 2। 3 कार्बन के। तो obviously I can say that no carbon molecule is lost in the conversion of glucose to pyruvate. Okay, no carbon molecule। देखो पायरुवेट 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, तो पायरुवेट कितने बन गए? 2। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे पास कार्बन कितने थे? 6। ओके, सो रिमेंबर बेटा, नो कार्बन मॉलिक्यूल, ओके, नो carbon molecule is lost in the conversion of glucose, in the conversion of glucose to pyruvate। ओके, तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं बेटा? 2 pyruvates we get। now this aerobic glycolysis, again we have to discuss this aerobic glycolysis in detail. Okay, in detail, how glucose is getting converted to pyruvate. It is a series of long reactions. Already you have like you saw this in class 11th in biomolecules. We will be discussing this again over here, okay, with clear cut concept and the medical importance and the clinical significance, right? So aerobic glycolysis, ये third topic हो गया। Now my question to everyone over here, aerobic glycolysis is taking place in which part of the cell? Aerobic glycolysis is taking place in which part of the cell बेटा? फटाफट से इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, aerobic glycolysis is taking place in which part of the cell? अभी तो बताया है। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा? ओ गॉड, हॉरिबल। यस लिपिका, साइटोप्लाज्म। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो दिखाया ही नहीं अभी मैंने। सब ब्लाइंडली आंसर करते हो तुम लोग। बेटा अभी तक तो साइटोप्लाज्म में ही है ग्लूकोज। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक तो माइटोकॉन्ड्रिया आया भी नहीं है पिक्चर में। मैंने तो एक बार नाम भी नहीं लिया। पता नहीं तुम लोग के दिमाग में कैसे आ जाता है। आई डोंट नो हाउ मच एक्स्ट्रा पावर्स यू हैव, लाइक। तो यस बेटा, अभी तो सिर्फ साइटोप्लाज्म की ही बात हो रही है ना। अभी तो सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। मैंने किसी ऑर्गेनेल की बात की ही नहीं। आई हैवंट टॉक्ड अबाउट एनी ऑर्गेनेल येट। चलो, अगर ग्लूकोज
ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है बेटा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रिमेंबर, इन absence of oxygen, this glucose will convert into, okay, this glucose will convert into lactate. This glucose will convert into lactate, and this is something which is called as anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis. Anaerobic का मतलब क्या होता है बेटा? Without oxygen, in absence of oxygen, the glucose will get converted into lactate. Lactate. Now my question to everyone again, now anaerobic glycolysis, where is the site, which part of the cell? चलो बताओ आंसर. Anaerobic glycolysis will take place in which part of the cell? बताओ, anaerobic glycolysis will take place in which part of the cell? Yes, मेरी क्योर, इट इज साइटोसोल, उस्मान, रिया, जैनाम, हर्ष, लिपिका. बेटा ये सब पता हो जाना चाहिए ना. अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल टेक प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल टेक प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ये सारे आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं बेटा, एक डायग्राम में सब बता देता हूँ, फिर भी तुम लोग. यस, लिवर. लिवर. जयश्री, रिया, वेरी गुड बेटा. इट इज द लिवर ओनली. इट इज द लिवर ओनली. यस, it is the liver. Madhu, Harsh, Raj, Kriti, Jainam, Anshul, Kiran, very good बेटा. Perfect, 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 perfect. Now बेटा अब ले आओ माइटोकॉन्ड्रिया को पिक्चर में. अब हम लोग ले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पिक्चर में. So remember बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया is a double membranous structure. Okay, mitochondria, it is a double membranous structure. Okay, so mitochondria, it is a double membrane structure, the outer mitochondrial membrane and the inner mitochondrial membrane. Yes. So now what will happen, beta? Now what will happen? This pyruvate, okay, this pyruvate will now enter the mitochondria. Now this is something which is called as the mitochondria. Now this is something which is called as the mitochondria. ओके, नाउ पाइरुवेट कहाँ आ गया है? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया है. ठीक है, पाइरुवेट कहाँ आ चुका है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और पाइरुवेट यू ऑलरेडी नो, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. नाउ दिस पाइरुवेट, okay, this pyruvate inside the mitochondria, it will get converted into acetyl coenzyme A. It will get converted into acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. Means one carbon it is lost. Okay, one carbon it is lost in the form of CO2. Okay, one carbon it is lost in the form of CO2, and this okay, and the enzyme that is used to convert pyruvate to acetyl coenzyme A, it is called as pyruvate dehydrogenase. It is called as pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase beta. Okay, I will come to all the enzymes also, so no need to worry beta. एक एक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. So this conversion beta, this conversion, it is one single reaction and it is called as the link reaction. It is called as the link reaction. Okay, and remember that it is occurring in mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. It is occurring in mitochondrial matrix. So अब तक हमें 5 चीजें मिल गई हैं पढ़ने के लिए. There are 5 things that we have to discuss. We have to discuss the link reaction in detail. We have to discuss the link reaction in detail.
yes, we have to discuss anaerobic glycolysis in detail. Okay, anaerobic glycolysis in detail. ओके, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, तीन तो ये हो गए। फिर ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ये पांच चीजें हो गई। अभी तक कोई डाउट है? फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि अभी तक कोई डाउट है किसी को। फटाफट से एक थम्स अप दे दो इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। यस, चल, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो ये पांच चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। अंशुल, कृति, जयनाम, जयश्री, रिया, ये सब जो चीजें बता रहा हूं ना कि लिंक रिएक्शन कहां पे होगा, वेयर विल द लिंक रिएक्शन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फटाफट से आंसर्स आने चाहिए। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिवर, ग्लाइकोजेनेसिस लिवर, तो ये सब चीजें बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यस, सो यस यस, परफेक्ट। चलो, अब अब देखो, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में, ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए, it will combine with, okay, yeah, it will combine with oxaloacetate, it will combine with oxaloacetate. Remember beta, oxaloacetate is a 4 carbon compound. So this acetyl coenzyme A, it will combine with oxaloacetate, which is present in the mitochondrial matrix, and yes, and it will lead to formation of citrate. It will lead to formation of citrate. And remember beta, citrate is a 6 carbon compound. क्यों? क्योंकि 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के and 4 carbon of oxaloacetate. 4 plus 2 क्या होता है? 6. So it will lead to the formation of citrate. Okay, citrate, yes, citrate will lead to formation of alpha ketoglutarate. अभी थोड़े थोड़े नाम थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, बट जैसे जैसे हम टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। अल्फा कीटोग्लूटारेट बेटा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, मींस यहां से एक CO2 गायब हो गया है, एक कार्बन गायब हो गया है, राइट। नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट, this alpha ketoglutarate will form succinyl coenzyme A. Okay, it will form succinyl coenzyme A, which is again a 4 carbon compound. So it means that again one CO2 is lost. 5 से 4 carbon हो गया, and this succinyl coenzyme A will have a series of reaction and it will convert into oxaloacetate. So this is a cycle guys, this is a cycle which is termed as, yes, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Krebs cycle. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Krebs cycle, or it is also called as citric acid cycle. Citric acid cycle. इसी पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आप लोगों को समझ आ गया, आप लोगों को समझ आ गया कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन, कंबाइन टू फॉर्म 6 कार्बन citrate. Citrate will convert into alpha ketoglutarate, will again convert into succinyl, again into oxalo. ये एक साइकिल चल रही है, and that cycle it is termed as Krebs cycle or citric acid cycle. अब इस क्रेब्स साइकिल को अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है बेटा। दिस क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। तो अब हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हो गए पढ़ने के लिए। तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि जो थर्ड टॉपिक है हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो गया, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो गया, राइट। देन वी हैव लिंक रिएक्शन, दैट इज द फिफ्थ वन। Then we have sixth one, that is the Krebs cycle or the citric acid cycle. Krebs cycle और citric acid cycle. तो ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने, बट बेटा लिंक देखो कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। पहले माइंड में पिक्चर बनाओ कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं कि हमने खाना खाया और खाना खाने से लेकर सेल के अंदर तक ये सब कुछ चल रहा है, खाना खाने से सेल के अंदर तक ये सब कुछ चल रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बेटा, ओके। आफ्टर दैट दो चीजें और पढ़नी है बेटा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये अलग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो हम सब ग्लूकोज का ही देख रहे थे,
तो एक टॉपिक और हो जाएगा गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, और एक और हो जाएगा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसको भी हमें ब्रेक करके देखना है, हाउ एनर्जी इज लिबरेटेड from galactose and fructose. These are again more two topics. These are again more two topics. One more topic that we have to discuss, it is gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Now when I say gluconeogenesis, matlab glucose, and it is like the new glucose that is formed, okay, from other sources, from proteins, from fats. How glucose is formed, that is like a new glucose which is not coming from the diet. It is like coming from fats or proteins. So yes, that is something that is called as gluconeogenesis that we will discuss. So mota moti, in the overview of carbohydrate metabolism beta, you have to remember all this. If I ask you, Krebs cycle or citric acid cycle will take place where? In which part of the cell? Chalo answer do. Krebs cycle or citric acid cycle will take place in which part of the cell? चलो आंसर दो, फटाफट से आंसर दो इसका. Krebs cycle or citric acid cycle will take place in which part of the cell? Yes, very good Madhu Tiwari. Defaulter matrix of mitochondria. सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे तो वो ऑप्शन में दे देंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो फिर आंसर क्या होगा? यस, इट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट. Yes, mitochondrial matrix. I hope this is clear to each one of you. I think overview is clear to each one of you. Just give me a thumbs up बेटा अगर overview समझ में आ गया. अगर overview समझ में आ गया है तो फटाफट से एक या thumbs up दे दो chat box के अंदर. If the overview is clear to each one of you. Yes, Ria, Gamers, Madhu, Jainam, Jayashri, Lipika, very good बेटा. Very good. Perfect, perfect, perfect. Raj Patel, Kriti, Harsh, Shal, Kiran, very good. Very good. Ashish, very good, very good. Medicure, perfect, perfect, beta. Now coming on to the glucose transporters, that is the other topic for the day today. That is the glucose transporters, beta. The glucose transporters. Yeah, the glucose transporters. So remember, beta, the glucose transporters are basically of two types. Okay, the glucose transporters are basically of two types. Okay, the glucose transporter are basically of two types. We have sodium dependent and we have sodium independent glucose transporters. Sodium dependent and sodium independent glucose transporters. Now when I say sodium dependent, it clearly means beta I'm talking about sodium, okay, GLT. Now SGLT, S किसके लिए है? सोडियम के लिए, और GLT किसके लिए है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. Okay, this is called as SGLT. In short, it is sodium glucose transporter. It is called as sodium glucose transporter. Sodium glucose transporter. Okay, now when I say sodium independent, it is directly glut transporters beta. It is directly glucose transporter. What is the difference we will learn right now? Glucose transporters. Okay, glucose transporters. Okay, glucose transporters. So remember beta, SGLT, if we talk about sodium glucose transporter, it is sodium dependent. Okay, it is sodium dependent. It is secondary active transport. From your physiology knowledge beta, you should remember it is an active transport. And yes, it is secondary active transport. Whenever we say active transport beta, it means that it will use energy. Okay, it will use energy in the form of ATP. Okay, it will use energy in the form of ATP. Active का मतलब ही क्या होता है? Energy use करना.
पैसिव में एनर्जी यूज नहीं होती, पैसिव में वी डोंट यूज एनी एनर्जी बेटा. So yes, it is secondary active transport that use energy or the ATP, right? Remember beta, it is unidirectional. It is unidirectional. Okay, it is taking place in only one direction. And remember beta, it is against concentration gradient. It is against concentration gradient. Okay. Against concentration gradient. Now when I say against concentration gradient, beta एक concentration gradient होता है that you guys already know. If some molecules are outside, okay, so for example this is okay, if some molecules are outside the cell are very high in quantity, so they will move inside the cell due to the concentration gradient from high to low. Now, when I say against the concentration gradient beta, when I say against the concentration gradient, inside the cell, already the molecules are very high, but outside the cells, the molecules are less. So these outside the cell, the molecules which are less, they will again move to the cell, okay, against the concentration gradient, okay, and that moving requires energy beta in the form of ATP. That moving requires energy in the form of ATP, right? इतना समझ में आया सब लोगों को? इतना समझ में आया सब लोगों को? फटाफट से थम्स अप दे दो, फटाफट से बता दिया करो बेटा, क्योंकि सी बेटा व्हाट हैपेंस इज कि मैं आई एम जस्ट सिटिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ वॉल्स, सो आई एम कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द थम्स अप दैट यू आर गिविंग कि एटलीस्ट यू आर देयर टू लिसन. एक होता है लाइव क्लास में, जब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं. अब यहाँ पे तो अब ये है कि मैं तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, कौन बेड पर बैठा हुआ है, कौन लेट कर पढ़ रहा है, कौन घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है. तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके जो इस दूरभाष यंत्र के द्वारा जो आप ये लिखते हैं उससे मुझे आइडिया मिलता है. चल वेरी गुड बेटा, ये लाइव क्लास जैसे ही है, सब कुछ तो मैं पूछ ही रहा हूँ, इतना इंटरेक्शन हो रहा है हम सबका आपस में. इतना इंटरेक्शन तो मैं लाइव क्लास में करता ही नहीं हूँ, तो शक्लें देख के बता देती है ना लाइव क्लास में कि समझ में आया नहीं आया. कोई कुछ सो रहे होते हैं, यहाँ तो चलो फिर अभी तो नहीं पता है तो दैट्स फाइन. चल चल वेरी गुड वेरी गुड. चल इतना क्लियर हो क्या? नाउ सोडियम इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें एसजीएलटी की, ओके, अगर हम बात करें एसजीएलटी की बेटा, तो एसजीएलटी यहां पे ही लिखूंगा मैं. रिमेंबर चलो, if I talk about SGLT over here, sodium glucose transporter. So remember beta, these are of two types, okay, these are of two types. These are SGLT1 and sodium glucose transporter 2. Now SGLT1, it is present in intestine, okay, it is present in intestine, okay, intestine. And you already know intestine has luminal side that is called as, जो साइड ल्यूमन की तरफ होती है बेटा, अगर ये सपोज इंटेस्टाइन है तो जो वाली साइड ल्यूमन, ल्यूमन का मतलब होता है बीच में जो खाली जगह होती है, तो जो साइड ल्यूमन की तरफ होती है, सो या ओवर देयर दिस इज प्रेजेंट सो दैट इट कैन एब्सॉर्ब glucose directly from the lumen, okay, so it is present in the intestine but it is the luminal side beta, okay, it is the luminal membrane, okay, of the intestine, okay. Even you will get SGLT1, even you will get SGLT1 in the renal tubules, in the renal tubules, okay, you will get SGLT1 in the renal tubules. Now renal tubules के नाम बता दो कौन कौन से होते हैं. चलो renal tubules, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं? व्हाट आर द टिब्यूल्स दैट यू विल एनकाउंटर इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन गाइस? आई वांट द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. हाँ चलो इसका आंसर दिखाओ जरा, फटाफट से बताओ. बेटा पीसीटी सुना होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल.
हाँ, पीसीटी डीसीटी, ठीक है चलो, इतना तो आई होप कि बेटा, मैं तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ तुम लोगों से। तो यस, FGLT2 जो है बेटा, FGLT2 जो है, ये सिर्फ और सिर्फ रीनल टिब्यूल्स में देखने को मिलता है। इट इज सीन ओनली इन रीनल टिब्यूल्स। ओके, इट इज सीन ओनली इन renal tubules. It is seen only in renal tubules. Yes. Now beta, what is the clinical significance of SGLT2? What is the clinical significance of SGLT2? Okay, ये highlighted है क्या? What is the clinical significance of SGLT2 that you have to remember? कि if there is a defect, if there is a defect in FGLT2, it causes a clinical condition. It causes a clinical condition, and that clinical condition, yes Varun, very good, it is called as renal glycosuria. Renal glycosuria means glucose in urea, means urine, glucose in urine, glucose in urine, renal glycosuria. That is, okay, you, for example, beta, if you already know, the kidney, it is made up of nephrons. हर एक ऑर्गन की एक बेसिक सेल होती है ना बेटा, ठीक है, हर एक ऑर्गन की एक बेसिक सेल होती है। लिवर की सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स को नाम क्या देते हैं? न्यूरॉन्स। इसी तरीके से किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको नाम देते हैं नेफ्रॉन। और अगर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के देखो बेटा, तो यू ऑलरेडी नो वी हैव बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, और ये क्या हो जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ये बोमेन्स स्पेस बोल सकते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब ब्लड जो फिल्टर होकर आया है बेटा, द ब्लड विच इज फिल्टर, इट विल अगेन कंटेन ग्लूकोज। नाउ you already know we want this glucose back in our body। हमारी बॉडी में ऑप्टिमम ग्लूकोज है, ओके, बट फिर भी ये ग्लूकोज हमें चाहिए। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, वी डोंट वांट ग्लूकोज टू बी वेस्टेड, राइट? सो व्हाट विल हैपन, दिस SGLT2 transporter will take the glucose back into the body। It will take the glucose back into the body। You already know it is working against concentration gradient, तभी तो इसको secondary active transport बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में तो ग्लूकोज का ऑप्टिमम लेवल है। तो but still glucose is an important compound, okay, important component। So what will happen if SGLT2 is not working? If it is not working, glucose will not be absorbed back, और ये यूरिन में कहाँ हो जाएगा? बाहर पास, यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा। तो इवन इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज बेटा, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी वेरी हाई, तो तुम देखते हो कि उनकी यूरिन पर वो चीटियां जो है, द एंड्स विल कम एंड लाइक क्रॉल ओवर द यूरिन। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज एन इंडिकेशन दैट इज गिविंग कि या द ग्लूकोज इज कमिंग, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रीनल ग्लाइकोसूरिया। यस, SGLT1 जो है रीनल टिब्यूल्स में मिलता है उस्मान, बट इट्स इन वेरी लेस क्वांटिटी, ओके। सो यस, most majority of the glucose like gets wasted, okay। So specifically if I'm talking about SGLT2, it is like present over here। क्या ये सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्लियर है सब लोगों को? क्या ये सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्लियर है सब लोगों को? चलो जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। आशीष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हर्ष उस्मान वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड, मधु जयनाम वेरी गुड, लिपिका रिया वेरी गुड, चलो perfect। Now coming on to the glucose transporters बेटा, glucose transporter they don't require sodium, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इंडिपेंडेंट। they don't require sodium, so they are called as सोडियम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब सोडियम की जरूरत नहीं है, they इनको सोडियम की जरूरत नहीं है, ओके। सेकेंडली these are facilitated type of diffusion, okay, facilitated carrier mediated diffusion।
नाउ अब FGLT और ग्लूट्स में फर्क क्या होता है बेटा? FGLT और ग्लूट्स में फर्क क्या होता है? अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बेटा, पैसिव डिफ्यूजन। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, और पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इस वाले केस में बेटा, सोडियम वाले केस में मैंने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ला रहे हो, किसी को खींच कर ला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी विल बी लाइक मच, एनर्जी विल बी यूज्ड। ओवर हियर द एनर्जी इज नॉट यूज्ड, इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Okay, it is a passive diffusion. Okay, and it is along the concentration gradient. Okay, it is along the concentration gradient. It is along the concentration gradient. Remember, it is from high concentration to low concentration. From high concentration to low concentration. From high concentration to low concentration. बेटा अभी तो पढ़ लो, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में देख लेंगे। पढ़ाएंगे बेटा, सब कुछ पढ़ाएंगे, बट अभी जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उतनी डिटेल में पढ़ो। एक एक चीज बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आराम से इसको एक एक चीज को ध्यान से बारीकी से देख देख के पढ़ो मेरे साथ। बात की टेंशन छोड़ दो अभी। ठीक है, बाद में क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, चल नाउ व्हाट हैपेंस बेटा? नाउ on the plasma membrane, okay, on the plasma membrane, basically, yeah, on the plasma membrane we have, yeah, the glucose transporter. The glucose transporter, it has two states beta. The glucose transporter has two states. Okay, now suppose this is the glucose transporter. Now this state, it is called as the ping state. Okay, this state, it is called as the ping state, and this state, it is called as the pong state. Okay, ping state and pong state. Now what happens beta? What happens whenever, okay, whenever the glucose comes, okay, ये क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब ये सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल इज कवर्ड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर क्या है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है। बाहर क्या है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है। ओके, so you already know the glucose level is out. So glucose, now this glucose transport will create a structure that is called as the pink state. It will be called as the pink state. Yes, it will be called as the pink state, right? Just a moment, I got an important call. So yes, this is called as the pink state. Yes, this is called as the pink state, or it will take the glucose down into the cytoplasm. That is called as the Pong state. That is called as the Pong state, right? So yes, that is about the ping and the pong state. So now beta, what happens whenever we take the diet, the blood glucose level accumulates in the intestinal, like accumulates like in the intestinal cells होती हैं, okay, और इन्हीं intestinal cells की जो membrane होती है उस पर लगा होता है these glucose transporters, right? So yeah, the glucose will come into this pink state, and automatically it will be landing it into the cytoplasm. That is called as the Pong state. Okay, so this glucose transporter has a special mechanism beta, that is called as ping pong mechanism. That is called as the ping pong mechanism. Okay, so that is something that we have to remember. Okay, if we talk about passive diffusion beta, passive diffusion, yeah, passive diffusion, yeah, passive diffusion is like, yeah, it will go like this.
Okay, after a certain level it will be like saturated. Okay, so yeah, this is the characteristic of the facilitated diffusion. If we like plot a curve between the velocity and the substrate, if we plot a curve between the velocity and the substrate beta, so remember it is a substrate, okay, saturable curve बेटा एक लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाता है ये, ठीक है. So this is the characteristic feature of all the diffusion. This is the characteristic feature of all the diffusion. Okay, the velocity of this transport after a point of saturation it will not occur. Okay, अगर simple diffusion बोले तो simple diffusion is a straight line. Okay, ये facilitated diffusion है. Okay, so yeah, that is like the curve that you all have to know about this. Now, types of the glute. I hope this is clear to each and everyone. I hope this is clear to each and everyone. So just give me a thumbs up, beta, if this is clear to each and everyone. Sure. Okay. Ash, Harsh, Madhu, Jainam. Yes. Jayashri. Very good. Very good, beta. Lipika, Zaid. Very good. Kiran. Very good. Sure. Sure. ठीक है. Ria. Very good. Very good. Very good. Perfect. 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 Sure. Now, beta, types of glute and the distribution. You should remember the very first one. It is glute 1. Now, we have different types, and that is like you have to remember where are they present. Where are they present? The very first one, it is glute 1. And remember, the glute 1, it is widely distributed. It is widely distributed. It is found at almost all places. It is widely distributed. It is seen in brain. Okay, it is seen in brain. Okay, it is seen in placenta. Okay, it is seen in kidney, and it is also seen in RBC. It is also seen in RBC. Yes, it is also seen in RBC. Now, beta, when I say widely distributed, beta, I'm talking about glute 1. Okay, I'm talking about glute 1. Okay, it is seen in brain, placenta, kidney, RBC. Now, beta, brain. You already know, beta, brain needs glucose in all the state. अगर मैंने खाना खाया है अभी just I have just taken the food right now, so that is called as the fed state. Okay, after 6 hours also, brain is that organ which needs glucose at any state, whether you are fasting. Okay, if suppose I'm taking a fast of one particular day, if I'm taking a fast of one day, so ultimately brain is the most important organ of the body. Okay, so it requires the metabolic fuel, and that only comes from the glucose. So yes, glute 1 has to be present in brain. Okay, so yes, even if we talk about placenta, beta, you already know placenta. Okay, through the placenta, from the mother's blood, the glucose is going into the fetus. Okay, and fetus is only dependent on glucose. I have already told you, clinical importance, beta, fetus is only dependent on glucose or on the mother's glucose for its need. और वो किसके थ्रू आएगा? Placenta. So placenta has a widely distributed GLUT 1. Placenta has a widely distributed GLUT 1. Okay, so yes, placenta has a widely distributed GLUT 1, right? Now, if we talk about kidney, yeah, you already know, yeah, kidney is also an important organ. Yeah, we will have like GLUT 1 in the kidney as well. Apart from that, beta, RBC, RBC, yes. So RBC is only dependent on glucose. So whether it is fasting state or like if we are taking no, or it's a normal fed state. So yeah, RBC is also having this GLUT 1. So yes, and beta, this GLUT 1, it is insulin independent. It is insulin independent beta. इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है. इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है. Now, when I say insulin independent, beta, एक होता है insulin dependent और एक होता है insulin independent. Okay, for example, you already know, beta. For example, if I have consumed 1 liter of Coca-Cola, 1 liter of Coca-Cola, you already know the glucose levels. Okay, अगर suppose अगर मैंने अभी 1 liter कोक पी ली,
तो बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। अब क्या 1 लीटर कोको कोला पीने से मुझे डायबिटीज होगी? विल आई सफर फ्रॉम डायबिटीज और नॉट? Normally, people are drinking 1 liter of Coca Cola at one point of time. Are they suffering from diabetes? I want your answer in the chat box. No, they are not suffering from diabetes. Diabetes का मतलब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का बढ़ना persistent टाइम तक. Yes, yes, yes. Obviously, I will not suffer from diabetes. What will happen, beta? कि if cell, okay, if cell has a capacity of storage of 50 glucose. Okay, if 100 glucose are coming into the blood, if 100 glucose are coming into the blood, 50 glucose will be like absorbed, क्योंकि सेल की कैपेसिटी होती है, सेल has a capacity. 50 glucose will be absorbed directly, okay, by passive diffusion. But again 50 are left, again 50 are left, beta, again 50 are left. Now these 50 glucose, okay, will stimulate the beta cells of the pancreas, okay, the beta cells of pancreas to release insulin, and this insulin will stimulate the cell to again take this 50 glucose. Then it does not allow the 50 left glucose to stay in the blood. Okay, it does not allow the 50 left glucose to stay in the blood. ठीक है, इतना समझ में आया सब लोगों को? तो इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है बेटा, इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी, आरबीसी, दीज आर वाइटल ऑर्गन्स एंड दे एक्चुअली नीड ग्लूकोज ऑल द टाइम. ओके, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? फटाफट से थम्स अप दे दो. यस. Now GLUT2, it is seen in beta cells of the pancreas. चलो, वेरी गुड राज, जैना, मधु, हर्ष, किरण, वेरी गुड बेटा. Now GLUT2, it is seen in the beta cells of the pancreas. Okay, it is seen in the sinusoidal cells of the liver, the sinusoidal cells of the liver. Okay, GLUT2, it is seen in the basolateral side of the intestine, basolateral side of the intestine, and it is also seen in proximal convoluted tubule. Now obviously if it is present in the liver, I have already told you, liver में there is something which is going a process which is going in, that is called as glycogenesis. Okay, so obviously glucose is taken up to form the glycogen, right? So extra glucose should reach the liver, okay, so that it can be absorbed and the extra glucose can be converted into glycogen. तो क्या ये insulin dependent होगा? नहीं, it is insulin independent. Okay, it is also insulin independent beta. It does not require, okay, it does not require insulin. Okay, even if I'm talking about the beta cells of the pancreas beta, अगर beta cells of the pancreas को stimulation ही नहीं मिलेगा तो इंसुलिन रिलीज कैसे होगा? इंसुलिन रिलीज कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है, बीटा सेल्स के अंदर भी तो ग्लूकोज जाना चाहिए ना, तभी तो उसको पता चलेगा कि हाँ ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है. सो यस, beta cells receive the glucose and no, there is an enzyme called as glucokinase, okay, that will act and ATP will be produced. और ये ATP जब प्रोड्यूस होता है ना बेटा, it will close the K plus channel, that is the potassium channel, and open calcium channel. और इसी calcium channel की opening से you will find the insulin secretion. Okay, so even with insulin, beta cell should be able to pump the glucose into the beta cell. Okay, so that is because of this GLUT2 transporter. Yes, so yeah, which is not dependent on insulin, that is not dependent on insulin. So yes, now coming on to GLUT3 beta. Okay, so yes, coming on to GLUT3. Remember beta, the GLUT3, it is present in neurons. GLUT3, it is present in neurons. Now neurons beta, you already know these are the brain cells. Yes, they have very high affinity to glucose. Okay, even if there is starvation का मतलब है कि आपने 3-4 दिन तक कोई खाना नहीं खाया है बेटा, if you are
like absolutely without food, what will happen? Starvation, maybe your brain needs to work and brain needs glucose. Okay, so this GLUT3 is specific to these neurons, right? These are specific to these neurons. Okay, it can, this GLUT3 has very high affinity. Now when I say very high affinity, इट क्लियरली मीन्स बेटा सब कुछ छोड़ के ये ग्लूकोज को ब्रेन तक पहुंचाएगा. सो दैट इज वाई GLUT3 इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू न्यूरॉन्स और कहीं प्रेजेंट नहीं है. GLUT3 has a very affinity for like high affinity for glucose. It will pull or extract all the glucose to the neurons. It will pull or extract all the glucose to the neurons. ठीक है. Now coming on to GLUT4 beta. GLUT4, it is hard, okay, hard adipocytes. Adipocytes का मतलब हो गया fat cells beta. Fat cells, skeletal muscles, okay, the skeletal muscles, okay, and remember GLUT4, it is insulin dependent. Insulin dependent, okay. इंसुलिन डिपेंडेंट कहने का मतलब है इट विल ओनली टेक द ग्लूकोज. हार्ट में ग्लूकोज तभी जाएगा बेटा. ओके, हार्ट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द फैट पार्ट, राइट. इंसुलिन डिपेंडेंट clearly indicates it will only take the glucose when the blood glucose level is high in the body. Okay, now, okay, so yes, so just to decrease the amount of blood in the the glucose in the blood, these organs will be activated to take the glucose. Okay, so yes, now the glucose will enter only when the glucose levels are high in the body. इतना क्लियर है सब लोगों को? इतना क्लियर है सब लोगों को? Coming on to the fifth part. Yes, coming on to the fifth part, that is GLUT5. GLUT5, remember we have testis, yes, sperm, yes, intestine. Intestine, that is on the luminal side. Luminal side. Okay, so yes, remember that beta. Yeah, sperm, basically I'm talking about the fructose transporter over here. Fructose transporter. Okay, yes, it is called as the fructose transporter. So yes, that is something like required. इसको ना 5 से भी याद कर सकते हो बेटा. 5 है ना, F से स्टार्ट होता है, fructose transporter. ठीक है, और 5, it is like the sperm, testis and the luminal side of the intestine. The luminal side of the intestine. Okay, then we have GLUT6. GLUT6, it is present in spleen and leukocytes. Leukocytes. And the seventh one, that is the GLUT7 beta. It is present in liver and endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. So this is the list that you have to remember, guys. This is the list that you all have to remember. This is the list that you all have to remember. Okay, so remember. Okay, now I have questions for you people. Okay, now I have questions for you people and you people are going to answer me. Neuronal glucose transporter. न्यूरोनल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. चलिए आंसर बताइए इसका. न्यूरोनल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सा है न्यूरॉन्स के लिए? जल्दी से आंसर बताइए फटाफट. चलो, एवरीवन सेज GLUT3. GLUT3, वेरी गुड. कृति, yes, everyone is right. Kriti, Kiran, Jainam, Komal, Harsh, Madhu, Anshul, Riya, very good. Very good, beta. It is GLUT3. It is the GLUT3. Yeah. Now, the glucose transporter present in RBC. चलो, the glucose transporter present in RBC. जो important वाले हैं वो तो बता दो. The glucose transporter present in RBC. फटाफट से बताइए. Very good, Harsh, Kriti, Lipika, Kiran, very good. Very good. It is GLUT1. GLUT1, that is widely distributed. Yeah. Now,
GLUT present in beta cells of pancreas. GLUT present in beta cells of pancreas. Huh. GLUT2, GLUT2, GLUT2. Very good, very good. Huh. Chalo, very good. Everyone is right. Everyone is right. Okay. Now, if I ask you most abundant glucose transporter of RBC, most abundant glucose transporter of RBC, that is, yes, everyone is right. It is GLUT1. It is GLUT1. Yes. Chaliye, so that's the end of our session for today. That's the end of our session for today. I hope you already like understood the types of GLUT and its distribution in the various parts of our body. The GLUTs, the type of glucose transporters, the carbohydrate metabolism, and the overview. Yes, I hope it is clear. I hope it is clear. So yes, let us just. Hmm. So thank you for the amazing session. Thank you. Okay, okay, beta. Welcome, welcome, welcome. Yes, welcome. Sure. Bye, beta. Bye.